So dear students, today we are going to study chemical properties of non-metals. Dear students, हमने metals की chemical properties को पढ़ा है. We have seen that metals, upon absorbing some energy, they lose electrons and they form positively charged metal ions. And this nature we referred as electropositive character of metals. So previous class में हमने ये देखा कि metals जो होते हैं जब ये एनर्जी सर्टेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और इजीली लूज करते हैं तो पॉजिटिव मेटल आयंस बनते हैं. इस फिनोमिनन को हम कहते हैं कि मेटल्स आर हैविंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. सो जो मेटल जितनी ईज से, जितनी आसानी से और जितनी रैपिडली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो उतना ही रिएक्टिव होता है. ये भी हमने देख लिया है पिछले क्लासेस में. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक दैट इज नॉन मेटल्स. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यही कंसेप्ट नॉन मेटल्स के लिए अप्लाई करेंगे, नॉन मेटल्स they need large amount of energy to lose one or more electrons and that is not possible. तो इसके बरक्स जो metals होते हैं they gain electrons with the release of energy. And with this process these non-metals they form negatively charged ions. So this character of the non-metals, it is known as the electronegative character. So this is how metals and non-metals behave. So if we quote here an example, अगर हम यहाँ पे एक example mention करेंगे, suppose we have chlorine atom. Dear student, you know that chlorine atom, its atomic number is 17 and its electronic configuration is 2, 8 and 7. Dear students, chlorine का तीसरा एनर्जी लेवल इट इज इन शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो हियर क्लोरीन it gains 1 electron and it forms Cl negative ion. So इसकी जो configuration होगी it will be 2, 8 and 8. So this is how non-metals they gain electron as per their requirement. अगर हम ऑक्सीजन की बात लेते हैं, ऑक्सीजन की एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 6. सो ऑक्सीजन के दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. सो इट नीड्स 2 more electrons to have its octet, to have its second energy level complete. So it will gain 2 electrons. So oxygen will form O2 negative ion, 2 and 8. So इस नेचर को जिसमें नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज द इलेक्ट्रो positive character or nature of non-metals. So dear students, now we will come to the chemical reactions of non-metals. So पहली chemical reaction है reaction with oxygen.
डियर स्टूडेंट्स, जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स when they are heated in presence of atmospheric oxygen, that is the oxygen from air, and here non-metallic oxides are formed. Simply I will write here oxides are formed. But the oxides which are formed here when non-metals are heated with oxygen, that is the acidic oxide, or the oxide, it may be a neutral oxide. So dear students, जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ हीट किए जाते हैं, द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स और फॉर्म्ड, और ये जो ऑक्साइड्स है, दीज ऑक्साइड्स दे मे बी एसिडिक ऑक्साइड्स और दे मे बी न्यूट्रल ऑक्साइड्स. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है, these non-metallic oxides, dear students, they are covalent in nature, or we can say that they are covalent compounds. dear students, हमने metals के केस में देखा था कि metals जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किए जाते हैं तो वहाँ पे मेटलिक ऑक्साइड्स बनते हैं जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, या कुछ मेटलिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक जैसे एल्युमिनियम और जिंक का, और वो मेटलिक ऑक्साइड्स आयोनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के कारण वहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स बनते हैं, तो वो आयन्स फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ हेल्ड टुगेदर होते हैं. लेकिन यहाँ पे जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं, dear students, they are covalent compounds, they are covalent in nature. Dear students, you know that covalent compounds में covalent bonding होती है, और covalent bond शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन नहीं होते हैं, यहाँ पे आयोनिक स्पेशीज नहीं बनते हैं. सो यहाँ पे जो नॉन मेटल और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, this is formed by sharing of electrons between non-metal and oxygen. So these non-metallic oxides, they are covalent in nature. So let we come here कि जो एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं, इनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे या इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स है, ये एक्चुअली वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है जब इनको हम पानी में डिजोल्व करते हैं. when we dissolve these non-metallic oxides in water, they form acids. That is why these non-metallic oxides are known as, referred as acidic oxides. Now taking some examples, dear students, अगर हम कार्बन को देखेंगे, कार्बन, if we burn carbon in excess of air, that is oxygen reacts with it, oxygen from air, this is carbon and this is non-metal. When it burns with oxygen, so it forms CO2 gas. This is carbon dioxide gas.
And dear students, this carbon dioxide gas is acidic oxide. How it is acidic oxide? If this CO2 gas is dissolved in water and H2CO3, this is carbonic acid. This is an acid, so carbonic acid is formed. So that is why CO2, it is an acidic oxide. And here it, when it is dissolved in water, it forms carbonic acid. So अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, सपोज सल्फर की. When sulfur is burnt in air, that is, it reacts with oxygen of air, that it is sulfur, and it is non-metal. SO2, sulfur dioxide. Sulfur dioxide is formed, and this sulfur dioxide, it is again the acidic oxide. And when this acidic oxide, SO2 gas, it is dissolved in water, liquid, it forms H2SO3 aqueous. This is sulfurous acid. So यहाँ पे भी एक एसिड बनता है. That is why sulfur dioxide, oxide of this non-metallic element sulfur, it is an acidic oxide. Dear students, ये acidic oxide है. जब हम इनको blue litmus के साथ treat करते हैं, they turn blue litmus to red. This is how we identify acids with the help of the litmus paper. So now, dear students, let us come to the neutral oxides. Neutral non-metallic oxides. Dear students, neutral means they do not react. These oxides do not react either with acids or with bases. ये न तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और न तो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज न्यूट्रल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. सेकंड, ये ऑक्साइड्स जो है, दे डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस, नॉर रेड लिटमस टू ब्लू. ये या तो ब्लू लिटमस को रेड टर्न नहीं करते हैं क्योंकि ये एसिड्स नहीं है, या तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट एक्ट एज बेसिस. सो दीज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, दे आर न्यूट्रल. और इनकी जो एग्जांपल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, H2O वाटर, NO nitric oxide, N2O nitrous oxide. So dear students, अगर हम CO की बात करते हैं, कार्बन जो है solid, it is the non-metal. जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं, ऑक्सीजन ऑफ एयर, बट डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेड सप्लाई. Supply of oxygen is taken here. So यहाँ पे क्या बनता है? Carbon monoxide gas. So it is twice 2 oxygen atoms, and this is also taken as twice. So this is
carbon monoxide, and this is the neutral oxide. Another example is if we take hydrogen gas, if it is reacted with oxygen gas with the help of an electric spark, and we obtain twice H2O. It's twice, it is twice, 2 2s are 4, it is 4, and this is the water, and this is the neutral oxide. So dear students, this is how non-metallic elements react with oxygen and form oxides. The oxides of non-metals we have seen, they may be the acidic oxides or neutral oxides. For example, carbon forms CO2, which is the acidic oxide when carbon is burned in excess amounts of oxygen. But if carbon is burned in limited supply of oxygen, carbon monoxide is obtained, which is a neutral oxide. Yes, students, I hope that you will like this class. Thank you for watching.